Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So as you already know that we changed the name of our YouTube channel. So हम लोगों ने हमारा YouTube चैनल का नाम चेंज किया है. So पहले इसका नाम था केमिकल बॉन्डिंग एंड नाउ current name of our YouTube channel is concepts in chemistry. So चैनल का नाम हम लोगों ने चेंज किया केमिकल बॉन्डिंग से concepts in chemistry. So एक छोटा सा इंफॉर्मेशन जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ. सेकेंडली, कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जिन जिन लोगों ने रिसेंट CSIR नेट एंड गेट एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और जिन लोगों ने अभी तक CSIR नेट और गेट दोनों एग्ज़ाम में भी नहीं क्लियर कर पाया. सो उन लोगों को मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ, दिस इज़ नॉट अ बिग लॉस्ट फॉर यू. सो there is so many things in life, so many exams in real life, so this is not a big loss, just mind it. So focus for the target. So next target is the upcoming CSI NET exam and GATE 2023. So keep trying. So all the best for you. So जिन लोगों का अभी CSI नेट और गेट नहीं हुआ, सो उन लोगों के लिए सिर्फ जस्ट ऑन सजेशन. सो जो मिस्टेक हुआ था, आप लोगों ने, ये बात सही है जो आप लोगों ने बहुत ट्राई किया. सो यू वर्कड हार्ड, वी ऑल नो दैट, बट फॉर सम रीजंस समटाइम्स ये हो जाता है टाइम मेंटेनिंग. सो इन एग्जाम हॉल टाइम मेंटेन हो नहीं पाता है और बहुत सारा स्मॉल मिस्टेक हो जाता है. सो फॉर दैट रीज़न नेगेटिव मार्क भी आ जाता है. सो ये एक उतना बड़ा बात नहीं है, बट ठीक है, टारगेट करना पड़ेगा नेक्स्ट CSI नेट एंड गेट एग्जाम. सो कीप ट्राइंग. सो डू योर बेस्ट एंड अपने आप में एक कॉन्फिडेंट लाना होगा. ठीक है, नहीं हुआ इस बार तो अगले बार करना पड़ेगा और हो जाएगा. बस जो मिस्टेक किया है पहला एग्जाम में वो थोड़ा सुधारना पड़ेगा और बाकी प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा बहुत कुछ. और प्रैक्टिस में और पढ़ाई में थोड़ा रेगुलरिटी मेंटेन करना पड़ेगा. रेगुलरिटी मीन एवरी डे. अगर आप लोग दिन में 2-3 घंटा पढ़ रहे हो तो वो मेंटेन करना पड़ेगा हर रोज. एक दिन पूरा 8 घंटा पढ़ लिया, बाकी 2-3 दिन नहीं पढ़ा, तो वो शायद उतना इफेक्टिव नहीं होगा. सो इफेक्टिव पढ़ाई तभी होगा शायद अगर रेगुलरिटी मेंटेन करोगे आप लोग. मीन्स 2-3 घंटा और 2 घंटा ही पढ़ो, दिन में 4 घंटा पढ़ो, बट रेगुलरिटी हर रोज, एवरी डे यू हैव टू डू द वर्क. सो this is for some information. So now come to the main point. So we all know that the BARC exam is in the first week of April. So this exam will be held on 2 phases. First phase is 2nd April and second phase will be held on 6th April. So this video is going to be BARC special video. So हम लोगों ने एक नया सीरीज स्टार्ट किया. सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस न्यू सीरीज. सो सीरीज का नाम है केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट बूस्टर. सो इन दिस सीरीज हम लोगों ने बहुत सारा डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे. सो फॉर एज अ रिजल्ट, सो
आप लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा बेहतर होगा, सो इट्स मेक्स और इट्स बूस्ट योर कंसेप्ट। एंड सो ये वाला सीरीज में मैक्सिमम हम लोगों ने जो क्वेश्चन पहले सेट नहीं हुआ था कोई भी एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर कुछ क्वेश्चन मिला जो पहले सेट हुआ था प्रीवियस ईयर पेपर में, CSIR नेट गेट और बार्क का, अगर वो क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल है तो वो क्वेश्चन भी हम लोग इस वाला सीरीज में डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटेबल क्वेश्चंस। जनरली जो क्वेश्चन सिलेक्ट होता है नेट गेट बार्क में और अदर्स MSc एंट्रेंस में, वैसा रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, बट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो एज अ रिजल्ट आप लोगों का डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन से थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा और देखने को मिलेगा कैसा कैसा क्वेश्चन हो सकता है। सो दैट इज फॉर ऑल। एंड so in this series we will discuss three part, means chemistry concept booster, organic chemistry, chemistry concept booster, physical chemistry, chemistry concept booster, inorganic chemistry. So this is the first video of chemistry concept booster. In this video we will discuss 5 physical chemistry questions. So let's start. So this is chemistry concept booster 1. So from physical chemistry, I already told that this video we will discuss 5 questions from physical chemistry. So this is first one. So this question says that for a certain gas assumed to be ideal, the entropy is expressed as. So the entropy expression is that N is number of moles, alpha is constant, U internal energy, and V is volume. So the molar heat capacity at constant volume of the gas is. So we have to find from this expression the molar heat capacity means CV bar. CV is heat capacity and molar heat capacity means CV bar. So let's see the answer. So we all know from the combination of first law and second law of thermodynamics, we all know that du we can write TdS minus PdV. So there is a square box from where we can write, or we can easily derive the lots of thermodynamic equations, all of Maxwell's relations and all the other thermodynamic equation of state from that square box. So that we will discuss in a different video, but focus on the questions. So this expression of entropy is given. We have to find from this expression the molar heat capacity means CV bar, molar heat capacity at constant volume. So it's mentioned that it's mentioned here that at constant volume, not at constant pressure. Constant pressure means Cp, so since it's constant volume means CV bar. So we all know that du equal to TdS minus PdV. If you divide this expression with dt at constant volume, then du dt at constant V equal to T del S dt at constant V. So since we maintain the condition constant V, then dV is equal to 0. Constant V condition means dV, change in volume, is equal to 0. So this is not a kind of differentiations, this is just divide. Just we divide du by dt maintaining constant volume. That's why du dt equal to T ds dt. We just divide by dt. If we differentiate, then there will be so many terms. T is on term, ds is on term. So this is not a differentiation, this is just a division. We divide del t both side, du dt at constant V, obviously maintaining constant volume. So T del S dtV. So we all know del U del TV equal to CV.
molar heat capacity at constant volume equal to T del S del Tv. Now Cv by T equal to del S del Tv. So this is equation 1. Now from the equation, if we differentiate, now here हम लोगों ने differentiate कर रहे हैं, not dividing. अभी differentiate कर रहे हैं with respect to T at constant volume. हम लोगों को वॉल्यूम कांस्टेंट मेंटेन करना होगा ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन. सो n by 2 is constant, ds dt at constant volume, alpha is constant, become 0, plus 5 are ln u by n. So this is kind of ln x. If we differentiate ln x, then we will got the result 1 by x, u by n, so 1 by u by n. So 1 upon u by n, that is kind of 1 by x. Since this is not x kind of moiety, we have to differentiate again this with respect to t. So here in this term, two things is there, u and n. N is constant also, mole number. So 1 by n will be the same. Now del u del tv plus 0. So here is the regarding this differentiation, this type of differentiation. This is a simple equation. Y is equal to fx. If you differentiate y with respect to t, then since in this function t is not there, only x is there, that is variable. So we have to differentiate first this fx with respect to this term. With respect to this term means x. So we have to differentiate with respect to x first, dfx dx. Then this variable term we have to differentiate with respect to the main main function, means here the t. So dx dt. So अगर ये वाला इक्वेशन समझ में नहीं आया तो ये वाला समझ में आएगा. इफ y इज इक्वल टू ln x, हम लोग अगर dy dx करें तो क्या होगा, 1 by x होगा, बिकॉज इसमें वेरिएबल फंक्शन x है, हम लोग x के हिसाब से ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, 1 by x आ रहा है. इफ y इज इक्वल टू ln p, ये वाला इक्वेशन कंसीडर करो और हम लोगों को करना है dy dx. इसमें x नहीं है तो पहले हम लोगों को क्या करना होगा ये पूरा फंक्शन को ln p को विद रिस्पेक्ट टू p फर्स्ट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. उसके बाद जस्ट p को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. सो ln p dp विद रिस्पेक्ट टू p हम लोगों ने पूरा ln p को डिफरेंशिएट किया. उसके बाद ओनली p को मेन फंक्शन x के विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, dp dx. सो ln p dp, so dp ln p is so 1 by p, that is like ln x and dp dx. So same thing हम लोगों ने यहाँ किया. जस्ट u by n को u by n जो ये टर्म है पूरा इसको x समझ लीजिए. सो क्या होगा, हम लोगों ने t with respect to t we are differentiating. So 1 by this is ln x, 1 by x आएगा. 1 by x means here 1 by u upon n. Now we have to do again the differentiation with respect to t, this term. In this term only n is constant, so 1 by n सेम रहेगा. उसके बाद del u del t भी आएगा. एक नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, मुझे लगा सब लोगों को ये मालूम है. एक नॉर्मल कैलकुलेशन है, थर्मोडायनेमिक्स में ये सब लोग ये आप लोग पढ़ चुका हो. So now del s del tv, from the equation on we already established that del s del tv equal to cv by t. So we put here cv by t equal to n by 2, this 0, 5 r, u by n become 1 by u into 1 by n. Also del u del tv equal to cv. तो जब तक हम ये वाला एक्सप्रेशन हम लोगों को अगर ये वाला एक्सप्रेशन मिल गए तो हम लोग थोड़ा कंफ्यूज होगा शायद ये वाला इक्वेशन से cv का वैल्यू आ जाएगा. बट कंफ्यूज होने का कोई बात नहीं है. दोनों साइड cv है, cv कट जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कहाँ से cv आएगा. सो ठीक है, देखते ये वाला cv कैंसिल आउट हो गया, दिस n कैंसिल हो गया. नाउ क्या मिला, हम लोग को थोड़ा रिअरेंज करना पड़ेगा. u बिकम दैट साइड, u इक्वल टू n by 2 सेम रहेगा, 5r सेम रहेगा, जस्ट t राइट साइड में आ जाएगा. सो u इक्वल टू 5n by 2 5rt. ये इक्वेशन 2 हो गया. अभी इक्वेशन 2 को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे
with respect to t. Again equation 2 को, equation 2 means this equation u equal to n by 2 phi bar t. अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, डेल यू डेल टी वी आएगा, डेल यू डेल टी वी विद रिस्पेक्ट टू टी हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं बाय मेंटेनिंग कांस्टेंट वी, एन सी, एन रहेगा, 2 रहेगा कांस्टेंट, 5 आर रहेगा, टी है फंक्शन में, ये वाला इसमें टी है, हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, सो ये 1 हो जाएगा, सो एन 5/2 आर. नाउ डेल यू डेल टी वी इक्वल टू सी वी equal to n 5/2 r. So Cv become, this is heat capacity become n 5/2 r. If we do Cv by n, this term को बोलते हैं molar heat capacity. Cv by n means molar heat capacity. That is we normally this is the normal abbreviation of molar heat capacity, Cv bar. So Cv bar become 5/2 r. So Cv is heat capacity at constant volume, Cv bar molar heat capacity at constant volume. So the answer molar heat capacity become 5/2 r. So the questions, these are the questions. So the answer is option B, 5/2 r. So एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन था जो पहले कभी नहीं, कोई भी इंटर एग्जाम में ये क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं हुआ, बट ये क्वेश्चन हम लोगों ने सिलेक्ट किया जस्ट थोड़ा डिफरेंट वे थे ये रिप्रेजेंट करने के लिए, और थोड़ा कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करने के लिए, जस्ट एक डिफरेंट क्वेश्चन के थ्रू हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, और जस्ट बूस्ट टू योर कॉन्सेप्ट बाय शोइंग अ डिफरेंट क्वेश्चंस. एंड शायद ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लग रहा है ये एक सिंपल क्वेश्चन था, बस हो सकता है नेक्स्ट किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन सिलेक्ट हो जाए. सो ये शायद आप लोगों को पूरा क्वेश्चन एंड आंसर समझ में आया. सो दिस इज द ऑन क्वेश्चन. सो मूव टू द सेकंड वन. दिस इज फ्रॉम ionic equilibrium. So regarding the ionic strength, or you can say Debye equation related. So not Debye equation. So this is not Debye-Hückel limiting law. So this is ionic equilibrium. From the ionic strength I of acetic acid solution is 0.01. So ionic acid I is given at a particular temperature 20 degrees centigrade. The pH of the solution at that temperature is. So फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना होगा 2-3 बार, क्या क्या डेटा गिवन है और क्या क्या मांग रहा है, बस वो कॉपी में लिख लो. कोई भी एग्जाम में डाटा कौन सा दिया हुआ है वो लिख लो कॉपी में, क्या दिया हुआ है, कौन कौन टेम्परेचर, इलेक्ट्रोलाइट और कोई भी डाटा, कोई भी कंपाउंड क्या दिया हुआ है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या दिया हुआ है वो पहले कॉपी में लिख लो. सो आयोनिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है 0.001, टेम्परेचर दिया हुआ है, सेम टेम्परेचर में पीएच में हम लोगों को निकालना होगा. सो जस्ट वी हैव टू, हम लोगों को ये वाला इक्वेशन कंसीडर करना है, एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट. सो इस dissociate as acetate anion and H+ cation. So initially if the C is the concentration of acid, then initially the concentration of acetic acid is C, and before dissociation the concentration of anion and cation is 0. So at equilibrium, when the equilibrium takes place, means the dissociation occur in a solution. Then if alpha is the degree of dissociation, then at equilibrium the acetic acid concentration becomes C into 1 minus alpha, and the anion and cation concentration becomes C alpha and C alpha. For both cases, same concentration. So using this equilibrium equations, if we try to find the ionic strength from this equation, then we know that ionic strength equal to half of summation of Ci zeta square. Ci is the concentration of each species of electrolyte, zeta is the charge of each species of a particular electrolyte. Species means cation, anion. हो सकता है there are 2-3 cations or 2-3 cations and anions.
So we have to consider each of the species, mean each of the cation and anion. So half of, in this case, two species there on cation on anion. So concentration of acetate anion, Z means charge of acetate anion square, plus concentration of H plus and Z of H plus square. So concentration at equilibrium, we have to consider the equilibrium condition concentration. So C alpha is the concentration of acetate anion. C alpha charge is -1, that is whole square. H plus concentration C alpha, charge is +1 whole square, so it becomes C alpha. So now according to our equations, give equilibrium or dissociation equation, हम लोगों को ionic strength मिला C alpha. Now in the given question, ionic strength was given as 0.001. So C alpha is equal to 0.001. C alpha is C alpha is C alpha is the concentration of equilibrium concentration of acetate minus और H plus. So हम लोग ये C alpha के जगह H plus पुट कर सकते हैं. Concentration of H plus, concentration of H plus हम लोग C alpha जगह पुट कर दिया, because at equilibrium concentration of H plus is C alpha. Now minus log H plus equal to minus log 0.001, minus log H plus means pH, so minus log 10 to the power minus 3 equal to 3. So the answer is 3. So correct option is A. So this is also a different type questions from ionic equilibrium. So ये ionic strength related बहुत क्वेश्चन पहले CSIR-NET और गेट में बहुत सारा क्वेश्चन शायद इस एवरी ईयर में एक दो क्वेश्चन इसमें से आ ही जाता है नेट और गेट में. So this is a different type questions relatable to the ionic strength, and मुझे लगा I feel that ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट थोड़ा आप लोगों को सीखने को मिलेगा. That was the dissociation equilibrium. We can make the dissociation of acetic acids, and accordingly we can find the pH of the solution using that ionic strength equation. So let's move to the question number 3. So this is from viscosity. Viscosity and surface tension. So that's a characteristic feature of liquid. So normally ये वाला चैप्टर में से क्वेश्चन थोड़ा कम ही आते हैं नेट और गेट में, बट कभी कभी विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं CSIR-NET में और गेट में भी. सो दिस इज अ डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस. सो मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ, ये क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन पहले कभी नहीं सेट हुआ, बस ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और जाते थोड़ा ज़्यादा कुछ सीखने को मिले, थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ सीखने को मिले हम लोगों को. और बार्क एग्जाम अभी 2 अप्रैल और 6 अप्रैल को है. सो इससे पहले थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा. और एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, जे बिफोर 2 अप्रैल हम लोग ट्राई करेंगे दिस केमिस्ट्री काउंसिल बूस्टर सीरीज में और 2 वीडियो बनाने के लिए. एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एक होगा और फिजिकल केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक वीडियो बनाएंगे केमिस्ट्री काउंसिल बूस्टर सीरीज में बिफोर 2 अप्रैल हम लोग कोशिश करेंगे. और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अदरवाइज अगेन फिजिकल केमिस्ट्री. तो ट्राई करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. अगर वो पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर मोर हम लोगों ने और 5 to 10 फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सो ये एक इंफॉर्मेशन देना था. सो क्वेश्चन 3, द वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी कोएफिशिएंट. So viscosity coefficient of a liquid decreases by 2% per degree centigrade rise in temperature. So 1 डिग्री means 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने से विस्कोसिटी कोएफिशिएंट डिक्रीज होता है 2%.
So if we increase temperature of a liquid 1 degree, as a result, viscosity coefficient of that liquid decreases by 2%. Now we have to find the value of neta at 25 degrees centigrade by neta at 75 degrees centigrade. So let's see the discuss the answer. So according to the question, so here I have to mention a important point. So just you can note that point. So according to the question, we can write this equation. So 1 by dt into dn d neta by neta इक्वल टू -2/100 माइनस इसलिए लिखा क्योंकि नीटा मीन सरफेस विस्कोसिटी कोएफिशिएंट डिक्रीज कर रहा है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, दैट्स व्हाई माइनस साइंस, एंड 2% मीन 2/100. बट इन दिस इक्वेशन सी वी राइट वेयर इन दिस केस हम लोगों ने क्या लिखा, डी नीटा बाई एन 1 by dt. सो चेंज इन नॉर्मल केस में क्या होता है, चेंज इन विस्कोसिटी कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर मींस dn dt हम लोगों को नॉर्मल लिखना चाहिए d नीटा बाई dt. मैं बार बार n बोल रहा हूँ, नॉट इट इज n, इट इज नीटा. सो बट एक बात शायद आपको याद होगा, जब हम लोग सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन, सो उसमें वेपर प्रेशर जब हम लोग देखते हैं वेपर प्रेशर डिक्रीज और चेंज इन वेपर प्रेशर, तो हम लोग क्या लिखते हैं, रिलेटिव चेंज मींस डेल p बाई p0, चेंज इन वेपर प्रेशर बाई original vapor pressure. So that's a relative change. In this case also we have to write that d neta by neta, change in viscosity coefficient with respect to original. This is relative change in viscosity coefficient with respect to temperature. In this case we can't write normally d neta by dt. अगर हम लोगों ने वो लिखा तो ये सही नहीं होगा, आंसर ठीक नहीं, आंसर राइट नहीं होगा. सो ये पॉइंट सिर्फ मेंशन करना था, जे हम लोगों को लिखना है डी नीटा बाई एन, चेंज इन विस्कोसिटी कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू दैट ओरिजिनल विस्कोसिटी कोएफिशिएंट मींस, so this is relative change in viscosity coefficient with respect to temperature. So now d neta by n minus 1 by 50 dt, if we integrate with proper limit, then 75 upper limit, 25 degree centigrade lower limit, then if we integrate with proper limit, then we will get ln neta at 75, neta at 25 is equal to -1, neta at 75 upon neta at 25 is equal to e to the -1, ln this side, if ln move to the right side then it's become exponential, so 1 by e. Now in the given questions, n neta 25 upon neta 75, we have to find this value 25 by 75. So 75 by 25 is 1 by e, then neta 25 by 75, just we have to reverse that it's become e. So the correct answer is e. So ये एक क्वेश्चन था विस्कोसिटी कोएफिशिएंट मींस लिक्विड प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड चैप्टर से. नॉर्मली ये चैप्टर से क्वेश्चन उतना सिलेक्ट नहीं होता है, बट कभी कभी ये लोग पूछ लेते हैं क्वेश्चन ये वाला चैप्टर से. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. सो ये एक क्वेश्चन था जो केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर है. सो फॉर अ गैसियस रिएक्शंस log k is rate constant given as a minus b upon t plus c log t. So k is rate constant and a, b and c are constant. The value of activation energy for the reaction is, so we have to find the value of EA, activation energy. So this is the equation given, log k a minus b upon t plus c log t. So multiplying both sides, if we multiplying this equation both sides by 2.303, then 2.303 log k become ln k, 2.303 a minus 2.303 b by t plus 2.303 log t become ln t, and c is the ये c ln t का सामने है. 2.303 log t means ln t, 2.30 log k means ln k. यहाँ पे 2.303 log t means ln t. अगर c ln t का सामने है तो हम लोग लिख सकते हैं ln t to the power c. अगर कोई कोएफिशिएंट सामने है ln का, हम लोग उसके पावर को और ln का अंदर जो फंक्शन है उसके पावर में लिख सकते हैं. ये आप लोगों को पता है, ये नॉर्मल एक मैथमेटिकल
थिंग है और प्रॉपर्टीज है लॉग और ln का. So now if we write that k, just ln this side, it's become exponential 2.303a. If we do here only k, then exponential ln tc, so exponential ln cancel out, only tc will be there, plus exponential minus 2.303 b by t. So this is equation 1. So now RNA's equation we know, k equal to a dash exponential minus ea by rt. Here ea is the activation energy. So मैंने यहाँ ए डैश लिखा बिकॉज प्रीवियसली क्वेश्चन में एक ए टर्म दिया है, वो एक कांस्टेंट टर्म है. मैंने फिर से अगर ये वाला इक्वेशन में ये लिखा तो ये कंफ्यूज होने का चांस है, इसलिए मैंने इसमें ए डैश लिख लिया. ये कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है. तो अगर ये वाला इक्वेशन, ये एक दो इक्वेशन हम कंपेयर करेंगे, सो हम लोगों को सिर्फ एक्सपोनेंशियल टर्म को कंपेयर करना है. इसमें एक एक्सपोनेंशियल टर्म है, एक एक्सपोनेंशियल टर्म है, दो एक्सपोनेंशियल टर्म है. सो मैक्सिमम गलती करने का चांस यहाँ है. मैक्सिमम स्टूडेंट सोचेंगे ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, ये भी एक्सपोनेंशियल टर्म है, दोनों मल्टीप्लाइंग ऑर्डर में है, सो ये अंदर वाला फंक्शन को प्लस कर लेते हैं. एक्सपोनेंशियल ये टर्म प्लस हो जाएगा, उसके बाद कंपेयर करेंगे. नहीं, क्वेश्चन पहले पढ़ लो. ए बी सी आर कांस्टेंट. सो इफ ए बी सी आर कांस्टेंट, देन एक्सपोनेंशियल 2.303 ये इज आल्सो कांस्टेंट. 2.303 ये का वैल्यू -1 हो सकता है, -2 +3 +4 +10 प्लस कोई भी एक नंबर हो सकता है. सो मीन्स दिस इज कांस्टेंट. सो एक्सपोनेंशियल कोई भी कांस्टेंट वैल्यू इज आल्सो अ कांस्टेंट. सो in this exponential term there is a variable function t is there. In this exponential function there is no t is there. This is a whole constant value, and only in this exponential term there is a t value. So we have to compare only these two exponential term, not this exponential term. So पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, उसमें ये टर्म हम लोग पहले पढ़ चुका है. नॉर्मल केमिकल काइनेटिक्स में जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, बट हम लोगों ने मॉडल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस भी पढ़ा, कोलिशन थ्योरी, दैट इज थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट एंड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी. सो वहाँ पे हम लोगों को कुछ इक्वेशन मिलेगा, कुछ एक्सप्रेशन मिलेगा फ्रीक्वेंसी फैक्टर को, जिसमें हम देखेंगे ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी टेम्परेचर का ऊपर डिपेंड करता है. इसका एक एक्सप्रेशन आएगा, उसमें टी रहेगा. सो ये जस्टिफाई होता है यहाँ से. ये पूरा टर्म हम लोग ये पूरा टर्म को ए के साथ कम, ए मीन्स फ्रीक्वेंसी फैक्टर के साथ कंपेयर कर सकता है, क्योंकि इसमें टी है. सी कांस्टेंट है, टी के पावर जो भी होगा 2 3 4 माइनस कोई भी हो सकता है. सो ये एक कांस्टेंट, उसमें टी है. सो ये पूरा टर्म फ्रीक्वेंसी फैक्टर के साथ कंपेयर कर सकता है, और बाकी ये जो टर्म है ये दोनों को हम कंपेयर करेंगे इसके साथ. So exponential minus e by rt equal to exponential minus 2.303 b by t. So if you write here, then ea become 2.303 br. So the activation energy, value of activation energy is 2.303 br. So the correct answer is option B, 2.303 br. So just यही पॉइंट मेंशन करना था. दोनों एक्सपोनेंशियल फैक्टर देख के दोनों को जैसे मल्टीप्लाई ऑर्डर में है, दोनों ये वाला टर्म को प्लस करके इसके साथ कंपेयर नहीं करना है, बिकॉज ये पूरा एक कांस्टेंट है, इसमें टी टर्म है, सिर्फ ये वाला फंक्शन को इसके साथ कंपेयर करना होगा. सो द क्वेश्चन 4 इज डन. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 5. So this is from solid state chemistry. So the characteristic K alpha line of chromium, iron and nickel have wavelength this and this respectively. Which of these may be used to determine the lattice spacing of 1 angstrom? So K alpha line होता है जब कोई मेटल का कोई एक शेल में एक्सरे. So this is from X-ray कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक्सरे. हम लोगों ने वहाँ एक्सरे का जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर और कुछ है एक्सरे रिलेटेड चैप्टर, उसमें हम पढ़ते हैं कि अल्फा लाइन. सो
ये तीनों मेटल के अल्फा लाइन ये तीनों मेटल से हम लोगों को मिलता है। ये तीनों मेटल से के अल्फा लाइन मीन्स द रेडिएशन हम लोगों को मिलता है जो हम लोग किसी और एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम हमारा सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में हम लोग रेडिएशन यूज कर सकते हैं कोई और क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक फेसर थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम लोगों को एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज करना पड़ता है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ दिस एंड दिस वेवलेंथ हम लोगों को मिलता है क्रोमियम, आयरन एंड निकेल से। सो ये मेटल का कोई इसमें रोल नहीं है क्वेश्चन में, जस्ट ये तीन वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन हम लोगों को मिलता है तीन मेटल से। ये तीन रेडिएशन में से व्हिच ऑफ दिस मे बी यूज्ड टू डिटरमाइन द लैटिस स्पेसिंग ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। सो ये तीन में से कौन सा रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ हम लोगों को चाहिए और हम लोग यूज कर सकते हैं एक क्रिस्टल का एनालिसिस करने के लिए जिसका इंटरप्लानर स्पेसिंग और इंटरप्लानर डिस्टेंस इज 1 एंगस्ट्रॉम। सो these 4 options. So let's discuss the answer. So from BARC's equations, we all know that 2d sin theta is equal to n lambda, d is equal to n lambda by 2d sin theta. If we consider n equal to 1, for n is number of order, so order of reflections. So if we consider n is equal to 1, then d minimum become lambda by 2. D minimum means when this sin theta value become maximum, this lower portion. So when sin theta value maximum, when this sin theta value become maximum, then d become minimum. So maximum value of sin theta is 1. We all know the maximum value of sin theta is 1. If sin theta value is maximum, then d become minimum. So minimum value of d mean interplanar spacing is lambda by 2. So ये वाला इक्वेशन से हम लोगों को एक कंक्लूजन मिलता है। सो हम लोगों को अगर कोई रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ यूज करना है कोई एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर एनालिसिस करने के लिए, अगर हम लोग कोई एक रेडिएशन एक्सटर्नल सोर्स में से कोई एक रेडिएशन हम लोग यूज कर रहा है कोई एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर एनालिसिस करने के लिए, सो इफ लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ दैट radiation, then the interplanar spacing of the crystal should be half of the wavelength, mean lambda by 2 minimum. So d minimum होना चाहिए लैम्डा का हाफ, जो हम लोग लैम्डा यूज कर रहे हैं उसका हाफ होना चाहिए। सो तीन वेवलेंथ दिया हुआ है। सो फॉर फर्स्ट वेवलेंथ 2.94, अगर ये हम लोग यूज करेंगे तो हम लोगों का जो पास जो क्रिस्टल है उसका d मिनिमम मीन्स उसका इंटरप्लानर स्पेसिंग होना चाहिए 1.47 मिनिमम। इससे अगर कम होगा तो वो हम लोग ये वाला वेवलेंथ से वो क्रिस्टल का एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। अगर ये वाला वेवलेंथ यूज करेंगे 1.94, देन डी मिनिमम बिकम 9.7 एंगस्ट्रॉम। इफ वेवलेंथ 1.66 एंगस्ट्रॉम हम लोग यूज करेंगे उसका ये वाला वेवलेंथ यूज करेंगे, अगर ये वाला वेवलेंथ हम लोग यूज करेंगे सो वो क्रिस्टल का डी मिनिमम होना चाहिए 0.83। सो हम लोगों का जो क्रिस्टल एनालिसिस करना है उसका लैटिस स्पेसिंग है 1 एंगस्ट्रॉम। सो 1 एंगस्ट्रॉम, बट if we want to use the first wavelength, then the d minimum value of that crystal should be 1.47, not less than that. हम लोगों को अगर ये वाला वेवलेंथ यूज करना है कोई एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर एनालिसिस करने के लिए, वो क्रिस्टल का डी मिनिमम वैल्यू होना चाहिए 1.47, इससे कम नहीं होना चाहिए। बट हमारे पास जो क्रिस्टल है उसका इंटरप्लानर स्पेसिंग है 1 एंगस्ट्रॉम, सो लेस देन 1.47। सो ये वाला वेवलेंथ से हम 1 एंगस्ट्रॉम लैटिस स्पेसिंग वाला क्रिस्टल एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। इन दो केस में डी मिनिमम 0.97 एंड 0.83 लेस देन 1 एंगस्ट्रॉम। डी मिनिमम वैल्यू ये होना चाहिए, इससे ज्यादा हो सकता है, 9.7 से ज्यादा हो सकता है, 1 भी हो सकता है, बट डी मिनिमम वैल्यू शुड बी 9.97 एंड 0.83। इससे अगर कम होगा तो ये वाला
वेवलेंथ हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर एनालिसिस करने के लिए। सो ये दो वेवलेंथ अगर हम लोग ये दो वेवलेंथ यूज करेंगे तो उसके लिए डी मिनिमम वैल्यू जो आएगा वो वाला वैल्यू है 9.97 एंड 0.83, बट हमारा जो क्रिस्टल है उसका डी वैल्यू है 1 एंगस्ट्रॉम, सो इससे ज्यादा है। सो ये सेकेंड एंड थर्ड वेवलेंथ को हम लोग यूज कर सकते हैं। हमारे पास जो क्रिस्टल है 1 एंगस्ट्रॉम इंटर प्लानर स्पेसिंग वाला जो क्रिस्टल है, हम लोग ये और ये दोनों सेकेंड एंड थर्ड दोनों वेवलेंथ को यूज कर सकते हैं एनालिसिस करने के लिए। सो बट फास्ट को नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर ये को यूज करना है तो इंटर प्लानर स्पेसिंग होना चाहिए 1.47 मिनिमम, मैक्सिमम तो इससे ज्यादा हो सकता है 1.47, 2 होना चाहिए, 2 होगा तो चलेगा, 2.5 होगा चलेगा, बट 1.47 से कम नहीं होना चाहिए। बट हमारे पास जो है डी वो है 1 एंगस्ट्रॉम, सो ये नहीं कर पाएंगे। बाकी सेकेंड एंड थर्ड दोनों ही हम लोग यूज कर सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम लैटिस स्पेसिंग वाला क्रिस्टल एनालिसिस करने के लिए। सो the correct answer is both 1.66 and 1.94 angstrom we can use for analysis of a lattice crystal of lattice spacing of 1 angstrom. So I hope आप लोगों को ये पूरा 5 क्वेश्चन समझ में आ गया। हम लोगों ने थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, रिविजन भी हो गया। बाकी वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक क्वेश्चंस और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक क्वेश्चन जो बहुत आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा, और इनऑर्गेनिक का भी हो सकता है और अगेन फिजिकल केमिस्ट्री का भी हो सकता है। 2 वीडियो बनाएंगे बिफोर 2 अप्रैल। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आ गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। सो ये अगर वीडियो आप लोगों को कुछ हेल्प, आप लोगों को कुछ ये वाला वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सो अगेन थैंक यू।